ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8માં પાઠ 2 હવે જોઈશું। પાઠ 2 તમારા પાઠ 2નું નામ શું છે? કચ્છ કી શેર। પાઠનું નામ શું છે? કચ્છ કી શેર। એ કચ્છ કી શેર પાઠ કોને લખ્યું છે? શ્રી હરેશ ધોલકિયા। કોને લખ્યું છે? શ્રી હરેશ ધોલકિયા। કચ્છ નિવાસીના હરેશ ધોલકિયા કોણ હતા? અધ્યાપક હતા। कच्छ निवासी के हरीश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तो की आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुवर्चित विंग्स ऑफ फायर प्रस्तुत पुस्तक का आपकी गुजराती भाषा में अनुवाद अंगन पंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य से आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखक के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुखाब है स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्वजन कार्य अंगदों का पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपके कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया गया है, जिससे कच्छ एवं इर्द गिर्द की दर्शनीय स्थानों पर परिचित कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों का विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो एम पहलू यात्रावृत्त में कच्छ की शेर एम आपणे पाठनी शुरुआत करीशुं। तो विशाल भारत के अनेक दर्शनीय प्रांत है, एटले विशाल भारत में अनेक जोवालायक राज्यों छे। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है, एटले शुं सौનું પોતપોતાનું महत्व अने सौंदर्य छे। सौનું शुं छे? પોતપોતાનું महत्व अने सौंदर्य छे। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात शुं छे? एमांथी एक अनोखुं राज्य छे। गुजरात में एक विशेष जिला है कच्छ। गुजरात में एक विशेष जिल्लो कयो छे? कच्छ छे, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश छे। ए गुजरातनुं केवुं छे? अत्यंत रमणीय प्रदेश छे। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्राळुओं माटे शुं छे? कच्छ एक खूब ज आकर्षणनुं केंद्र छे। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। आमां एमनुं पौराणिकनुं महत्व पण ओछुं नथी। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय भी कह सकते हैं। એટલે શું છે? અનેક દર્શનીય સ્થળોના વૈવિધ્યના કારણે તેને શું કહેવામાં આવે છે? મ્યુઝિયમ એટલે સંગ્રહાલય પણ કહી શકાય છે। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। कच्छ में प्रवेशता ज आपने रणना बे स्वरूपों जोवा मळे छे। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एमां शुं आपने जोवा मळे छे? बे स्वरूपों जोवा मळता होय छे। एमां एक कयुं होय छे? छोटा रेगिस्तान, एक नानुं रण अने बीजुं कयुं होय छे? मोटुं रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। એટલે શું કહેવામાં છે? આમાં આ બંનેમાં કોઈ પણ રેગિસ્તાનનો એટલે મતલબ બંનેમાં રણ જેવું કોઈ જ લક્ષણ દેખાતું હોતું નથી। રેત કहीं નજર નહીં આતી। રેત શું કંઈ પણ જોવા મળતી હોતી નથી। અંતઃ यह अनूठा रेगिस्तान છે। તો પણ શું છે? આ એક અનોખું રણ छे। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। શું આવે છે? સામખિયાળીને આપણે કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર પણ કહી શકીએ છીએ। કચ્છ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। શું થાય છે? કચ્છની યાત્રા અહીંયાથી જ શરૂ થતી હોય છે। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। અહીંયાથી
उत्तर दिशा बाजुए प्रवासनो प्रारंभ थाय छे। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो શું હોય છે? રાપરથી ધોળાવીરા પહોંચતા જ આપણી કઈ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ કઈ મોહેંજો-દડોનું સ્મરણ થાય છે। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। શું છે આ સ્થાન, આ જગ્યા છે એ કઈ 50,000 વર્ષના જૂના અવશેષો હે। 5000 વર્ષના જૂના અવશેષો छे। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। आ प्राचीन नगरीना दर्शनथी ज આપણે विस्मित થઈ જઈએ છીએ। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। શું થાય છે? આપણને પ્રાચીનતામાં આધુનિકતાના દર્શન થાય છે। सामखियाली के पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। सामखियाली पश्चिम थी प्रवास करती वखते भचाऊ नजरे पड़े छे। जो बड़ा गाँव है ए शू छे? बहु मोटू गाम छे, जैसे नगर, जाने नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। शू छे ते? औद्योगिक कारखानों एक शहर छे। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। ત્યાં શું છે? અહીંયા ત્યાં સિંધી પ્રજા ક્યાંથી આવી છે? પાકિસ્તાનથી આવીને અહીંયા સ્થાયી થઈ ગઈ છે। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। શું છે? ગાંધીધામ આદિપુર તથા ગોપાલપુરીનો વિકાસ ઉદ્યોગોને કારણે જ થયેલો છે। आदिपुर से गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। શું છે? આદિપુરથી ગાંધી સ્મૃતિનું સ્થળ, આદિપુરમાં ક્યાં? આદિપુરમાં ગાંધી સ્મૃતિનું સ્થળ તથા કંડલા બંદરનું ઘણું મહત્વ છે। कंडला का विकास वहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडलानो विकास त्यानी प्रजाओं माटे शू छे? खूब ज महत्वपूर्णनो छे। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। कंडला थी दक्षिणे क्यांथी? कंडला थी दक्षिणे भद्रेश्वर, कंडला थी दक्षिणे भद्रेश्वर अत्यंत प्राचीन जैन यात्राधाम छे। શું છે? જૈન यात्राधाम छे। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। શું છે? જે કંડલાથી દક્ષિણે ભદ્રેશ્વરનું અત્યંત પ્રાચીન જૈન મંદિર યાત્રાધામ હતું એ આરસ પહાડથી બનેલું 2500 વર્ષ જૂનું જિનાલય ભૂકંપમાં ખંડિત થયું હતું। શું થયું હતું? ભૂકંપના લીધે ખંડિત થઈ ગયું હતું। એટલે એનું ફરીથી બનાવવા માટેનું શું? પુનર્નિર્માણનું કાર્ય तीव्र गति थी चाली रह्યું હતું। ફરીથી બનાવવાનું કામ શું ચાલી રહ્યું હતું? ખૂબ ઝડપથી ચાલી રહ્યું હતું। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला, इससे आधुनिकता का स्पर्श मिले એટલે શું થાય છે? આનાથી આપણને એને આધુનિકતાનો સ્પર્શ મળે છે। મુન્દ્રા શહેર તહસીલ भी है। મુન્દ્રા શહેર શું છે? એક તાલુકો પણ છે। તહસીલને શું કહેવામાં આવે છે? તાલુકો કહેવામાં આવે છે। તહસીલમાંનો मतलब શું થાય? તાલુકો। तो मुंद्रा शहर एक तालुको छे। यहाँ अनेक उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली है। अहींया घणा बधा उद्योगों ने कारण एक दिशा अहींया मळी छे। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्रना किनारे शुं थई गयुं छे? समुद्रना किनारे दरिया किनारे શું થઈ ગયો છે? એનો બંદરનો વિકાસ થયો છે।
यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। અહીંયા શું છે? ઘણી બધી પ્રાચીન ઇમારતો છે। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। समुद्रना किनारे यात्रा करता करता क्या पहुँचे छे? मांडवी पहुँचे छे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी शू छे? बहु सुंदर बंदरगाह छे। बड़ा प्राचीन नगर छे। बहु मोटू प्राचीन नगर छे। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। अहींया शुं हतुं? बहु मोटुं प्राचीन नगर हतुं एटले अहींया बहु मोटा राजानो महेलो, पवनचक्कीओ अने समुद्र तटना कारणे शुं एक दर्शनीय स्थळ बनी गयुं हतुं। यहाँ VRTI अहींया शुं? VRTI ग्राम्य संस्था छे। 72 जिनालय छे। शुं छे? 72 जिनालय एटले 72 जिनालयों। 72 यानी 72 जिनालयों छे। पास ही बिंदड़ा गाँव में आंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। बाजू में एक बिंदड़ा नामनु गाम होय छे। त्यां शुं छे? आंतरराष्ट्रीय अस्पताल पण हॉस्पिटल होय छे। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गाँव है। आगे जता मांडवी में डुमरा अने कोठीरा, सुगरी अने जखोनु शुं छे? एक महत्वपूर्ण गाम छे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। जैनों शुं थशे? अहींया प्राधान्य नजर आवे, जोवा मळे छे। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। नलिया शहर शुं छे? एक तहसीली केंद्र छे। शुं छे? नलिया शहर एक महसूली केंद्र छे। तहसीली यानी महेसूली। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। अहींया शुं छे? हवाई दळनुं मुख्य विमानी मथक छे। हवे आ पेज पर जोजो विद्यार्थी मित्रों, तमे बधा पुस्तक लईने बेसजो, नहीं तो तमने पाठमां समझण पड़शे नहीं। एटले पुस्तक लईने जरूरथी बेसवुं। हवे आ पेज में जोईए। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नलिया थी 1 कलाक पछी यात्रा करता करता नारायण सरोवर पहुँचे छे। नारायण सरोवर शुं छे? खूब ज अति प्राचीन हतुं, पौराणिक हतुं अने धार्मिक स्थळ हतुं। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। आ स्थळने शुं मानवामां आवे छे? रामायण काळनुं मानवामां आवे छे। रामायण काळ गणाववामां आवे छे। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। त्यां शुं छे? कोटेश्वर नामनु एक दर्शनीय मंदिर छे, जहाँ से रावण गुजरा था। त्यांथी कोण पसार थयुं हतुं? रावण पसार थयो हतो। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। आ शुं छे? भारतनुं खूब ज प्राचीन स्थळ मानवामां आवे छे। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। શું માનવામાં આવે છે કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના દર્શન અહીં ખૂબ મોટું આકર્ષણ છે। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर थी आगळ वधे छे पछी कई सरोवर कई आवे छे? लखपत आवे छे, जो अति प्राचीन स्थळ छे। शुं छे? खूब ज मोटुं प्राचीन स्थळ छे। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। એટલે શું કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ નાનકના ચરણ રજથી પાવન થયેલી આ ભૂમિ પર ગુરુદ્વારો છે। કોના ચરણ રજથી? ગુરુ નાનકના ચરણ રજથી પાવન થયેલી આ ભૂમિ શું છે? ગુરુદ્વારો છે। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। एक समय हतो, खूब ज समृद्ध स्थान हतुं अने आजे जीर्णावस्था होवा छतां पण शुं छे? खूब ज दर्शनीय छे। यहाँ एक किल्ला है। त्यां शुं छे? एक किल्लो पण छे। उसके बगल में प्राणदो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। एनी बाजुमां शुं छे? प्राणदोनु खनिज संपत्ति माटे प्रसिद्ध छे। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। जोड़े जोड़े शो छे? विद्युत निर्माणनु पण केंद्र छे। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीरी मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है।
પછી શું છે, લખપતથી આગળ વધે છે ત્યારે કચ્છની આગળ જતાં હાજીપીરી મુસલમાનો માટે એમની શ્રદ્ધાઓનું એક કેન્દ્ર છે. યહાં પીર કા મજાર હૈ. શું છે ત્યાં? શું છે? એક પીરોનો મકબરો છે. મજારિયાની મકબરો એટલે અહીં પીરનો મકબરો છે. રેગિસ્તાન કી ઝાંકી યહાં સે હોતી હૈ. એટલે રેગિસ્તાનની શું થાય છે? રેગિસ્તાનની ઝાંખી અહીંથી જ થાય છે. રાસ્તે મેં માતા કા મઢ નામક ધાર્મિક સ્થાન હૈ. રસ્તામાં માતાના મઢ નામનું ધાર્મિક સ્થાન છે. जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए શ્રદ્ધા ભાવ સે દર્શનાર્થ આતે હૈ. એટલે શું, અહીંયા નવરાત્રિનો જ્યારે તહેવાર આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓ પદયાત્રા યાની ચાલીને આવતા હોય છે દર્શન કરવા માટે. आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है. रास्ते में चक्ष पूरेश्वर मंदिर बांधाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है. શું છે? આગળ જતાં નખત્રાણા કુદરતી દૃશ્યોનું કેન્દ્ર બન્યું છે. માર્ગમાં, રસ્તામાં ચક્ષ, પુરેશ્વર મંદિર અને વાંઢાઈ જેવા મનોહર પ્રાચીન સ્થળો છે. કયા કયા છે? ચક્ષ, પુરેશ્વર મંદિર, વાંઢાઈ જેવા મનોહર પ્રાચીન સ્થળો છે. अब कच्छ का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है. હવે શું થાય છે? કચ્છનું મુખ્ય દ્વાર કયું? ભુજ આવે છે એટલે એનું શું થાય છે? વૈભવનો પરિચય થાય છે. આઈના મહલ, પ્રાગ મહલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, હિલ ગાર્ડન, હમીરસર તાલાબ, ભુજિયા પહાड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं. कई कई जगहों नाम છે? આઈના મહલ. કયા કયા સ્થળો છે? આઈના મહલ, પ્રાગ મહેલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, હિલ ગાર્ડન, હમીરસર તળાવ, ભુજિયો ડુંગર, લોક સંગ્રહાલય, વિશ્વવિદ્યાલય વગેરેના દર્શન કરી આપણે આનંદનો અનુભવીએ છીએ. सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया. ક્યારે? 2001માં ભૂકંપે આને શું કરી નાખે છે? ખંડિત કરી નાખે છે. तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया. તો લોકો શું કરે છે? ફરીથી એને નવું બનાવીને, એનું નવું નિર્માણ કરીને એનું એક સુંદર શહેર બનાવી દે છે. એના પછી भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डोंगर पहाड़ है. ભુજના ઉત્તર દિશા તરફ જઈએ ને એટલે ખાવડામાં એક કાળા ડુંગર નામનો પહાડ છે. કયા નામનો? कालो डूंगर नामनो पहाड़ છે. पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है. पहाड़ पर चढ़ीने एक रेगिस्तानની ઝાંકી દર્શન કરવો એ ખૂબ જ અનૂઠો, અલગ જ અનુભવ છે. सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है. सरकार द्वारा અને સ્થાનિક દ્વારા અહીંયા રણોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. देश भर से लोग यहाँ आते हैं. दुनियाभરના લોકો અહીંયા આવે છે. सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है. सफ़ेद રણને જોવો એક ખૂબ જ આનંદદાયી ઘટના છે. भुज से अंजार भी जाया जाता है. भुजથી ક્યાં જઈ શકાય છે? અંજાર પણ જઈ શકાય છે. आगे बढ़ते हुए सूजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है. આગળ જતાં સુજનની સંસ્થાથી અને એમના પ્રજાઓથી હસ્તકળાનું એક અલગ જ અનુભવ થતો હોય છે.
જેસલ તોરલ કી સમૃદ્ધિ में મંદિર બના હે। જેસલ તોરલની સમાધિમાં યાદમાં કયું એક મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હોય છે? જો ઐતિહાસિક સ્થાન હે। શું છે? એક ઐતિહાસિક સ્થળ છે। યહાં સે આदिपुर તથા ગાંધીધામ જા सकते हैं। ત્યાંથી શું આदिपुर તથા ગાંધીધામ પણ જઈ શકીએ છીએ। सूरजबारी नामक संस्था से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। શું થાય છે? सूरजबारी નામના સ્થાનથી આપણી આ કચ્છ યાત્રા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। જો અવિસ્મરણીય સ્મૃતિયા છોડ જાતી હૈ। શું થાય છે? જે અવિસ્મરણીય સ્મૃતિ યાદો અહીંયા અંકિત કરી જાય છે। કહા જાતા હૈ કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા। શું કહેવામાં આવે છે? કે કચ્છ ન જોયું તો કંઈ જ ન જોયું। कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। શું કહેવામાં આવે છે? કચ્છ ગુજરાતનું ગૌરવ છે। તે સમસ્ત દુનિયાના લોકો માટે કોઈપણ ઋતુમાં દર્શનીય અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। અનુવાદક શ્રી મહેશભાઈ ઉપાધ્યાય। એમાં તમે શબ્દાર્થમાં જુઓ। अनूठा यानी अनोखा या विशिष्ट। रेगिस्तान यानी मरुभूमि। जीर्णोद्वार यानी पुनर्निर्माण। मजार यानी दरगाह। गुरुद्वार यानी सिखों का धार्मिक स्थल। भूचाल यानी भूकंप। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે અભ્યાસમાં જોઈશું। દરેક વિદ્યાર્થી અભ્યાસ જોશે। અભ્યાસમાં શું આપવામાં આવ્યું છે કે निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए છે। તો હું શું કરીશ? તમને બોલી જણાવીશ। એમાં પહેલું કયું છે? એમાં પહેલું આપવામાં આવ્યું છે મરુભૂમિ। પહેલું શું આપવામાં આવ્યું છે? મરુભૂમિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યારે શબ્દાર્થ સંધિ આપણે ચર્ચા કરી। અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।